Hey everyone, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe. So today I'm going to share this makeup tutorial, which is pink shimmery eyes makeup tutorial, and this is so gorgeous look. You can carry this look anywhere, and yep, let's get started. But before starting, if you are new to my channel, then just take a moment and subscribe. And the products I'm gonna be using, I'll be linking it down in my description box below. वहाँ पे आपको shade, name सब मिल जाएगा. So yep, let's begin. So first I'm going to moisturize my face, and for that I'm using Pond's Light Gel Moisturizer, and ये बहुत ही अच्छा lightweight moisturizer है which doesn't make your skin feel sticky or something. Then for the primer here I'm using my all-time favorite Nykaa Prep Me Up primer. Next for the foundation I'm using here today Maybelline Full Coverage Foundation, and क्योंकि ये glam look है so I wanted something full coverage, so that's why. and ये बहुत ही finish अच्छा है इस foundation का. I just love this foundation so much. ये हमेशा ना आपको मिल जाएगा ऑफर पे, थोड़ा सा प्राइसियर है but no worry, you will get this at maximum discount. नेक्स्ट फॉर द कंसीलर आई एम यूजिंग Maybelline Fit Me कंसीलर, एंड मैं बहुत ही कम अमाउंट में इसे अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरा जो फाउंडेशन है वो फुल कवरेज है, तो आई डोंट वांट टू केक अप माय फेस. आई वांट दैट ग्लो ऑन माय फेस, एंड द फाउंडेशन है वो मैट था, सो दैट्स वाई मैं वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करूँगी, एंड बहुत ईजीली ये ब्लेंड हो जाता है. इसका कवरेज मीडियम है, इट्स नॉट फुल कवरेज कंसीलर. नेक्स्ट आई एम यूजिंग ADS लग्जरी बनाना पाउडर. वेल ये अफोर्डेबल बनाना पाउडर है. अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे लूज़ बनाना पाउडर यूज़ करूँगी. इसका प्राइस बस 200 है. इसका जो छोटा पैक है उसका प्राइस है 100 रुपीज़ ओनली. सो यहाँ पे आपको शायद अमेजन पे मिल जाएगा. यूज़ करूँगी अमेजन का आई शेडो पैलेट. दिस इज सनराइज आई शेडो पैलेट, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पैलेट, एक्सट्रीमली पिगमेंटेड. सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस पिंकी शेड एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑन माई आउटर वी. एंड देख रहे हो आप मैं कैसा विंग शेप में इसे अप्लाई कर रही हूँ. एंड मैं जो एक्स्ट्रा बचा होगा ब्रश पे मैं उसको अपना क्रीज पे अप्लाई करूँगी जस्ट टू वार्म अप माई क्रीज अ लिटिल बिट. नेक्स्ट मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से ये जो डीप शेड है इसको लेके अपने जो आउटर जो है मैंने अप्लाई किया था पहले वाला कलर उसके ऊपर थोड़ा सा इसको डीप करूँगी. Then I am using this shimmery shade, and you can see this is a beautiful shade. इसमें थोड़ा थोड़ा silver chunks है which looks very good on eyelid. So I'm using this with my finger क्योंकि finger से you can get the maximum amount of pigmentation. Next I'm using NYB काजल, एंड ये काजल बहुत ही अच्छा है एक्चुअली. ये थोड़ा सा जल्दी आपको काम करना होगा इससे, ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है. सो मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा सा स्मच करूँगी, थोड़ा नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही स्मच करूँगी इसे. आप देख रही हो मैं बाहर की तरफ इसे विंग शेप में लेके जा रही हूँ, एंड मैं स्मच करके थोड़ा सा इसे आउट मेरा जो आईलिड है उन तक मैं ला रही हूँ. नेक्स्ट आई एम टेकिंग अ फ्लफी ब्रश एंड आई एम अप्लाइंग दिस पर्पल शेड ऑन माई लोअर लैश लाइन. Next, using a small flat shader brush, I'm just going to apply and smudge that kajal on my lower lash line. Next, I'm using Faces Canada Magnetic Eyes mascara, and I'm applying it on my upper and lower lashes. Next, for the contouring, I'm using Wet n Wild Mega Glow Contour Palette. एंड इसका कॉन्टोर शेड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जल्दी बहुत ही सुपर इजीली ये ब्लेंड हो जाता है. सो आई एम जस्ट कॉन्टोरिंग माय फेस एंड नोज. एंड जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू गाइस कीप ऑन आस्किंग कि कौन सा ब्रश आप यूज़ करते हो. सो नेक्स्ट फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग हियर शुगर ब्लश इन द शेड कोरल क्लाइमैक्स आई गेस. नेक्स्ट आई एम यूजिंग निका के परफेक्ट सेटिंग स्प्रे. ये मैट सेटिंग स्प्रे है. आई एम स्प्रेइंग इट ऑल ओवर माई फेस. आई एम यूजिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. आई एम जस्ट टैबिंग द प्रोडक्ट सो दैट एवरीथिंग लुक्स नेचुरल. Next for the highlighter using Wet n Wild highlighter in the shade Precious Petals, and it's a beautiful highlighter. You know guys how much I love this highlighter. So using an eyeshadow blending brush मैं इसको अप्लाई करूँगी मेरे फेस के हाइट्स पॉइंट्स पे, एंड मेरे नोज़ के लिए मैं अपने फिंगर्स को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा उससे ज़्यादा इफेक्ट आता है. तो यूजिंग अ स्मॉल ब्रश मैं अपने इनर कॉर्नर्स को एंड मेरे ब्राउ बोन्स को भी हाईलाइट कर लूँगी.
Then for the lipstick, I'm using Nykaa lipstick, So Cream Kim Matte lipstick in the shade Game On, and it's a beautiful shade and it's perfect for this look. So here's my final look, you guys. I hope you guys enjoyed watching this, and if you like this look, then please don't forget to give this video a big thumbs up, and I'll see you guys in my next video. And if you have any suggestion or video request, you can ask me, or you can comment that in my comment section. And bye guys, I love you all.